EXAM DOST success का host Sainik Navodaya में topmost. Starting with the question, talks about arrange the following numbers in the descending order. Speaking of descending order, we have to arrange the number from greatest to the smallest. Now this question is seemingly very easy, but remember that in our exams we will get a mix of both easy and tough questions. Now the first rule of arranging the number is that you look at the number of digits. Remember, the first thing which we do is we count the number of digits. The number having more digits will be the greater number. Many of the students, they don't realize that what is the first rule of comparing the numbers. तो हमें कई बार हमें ये बेसिक पॉइंट पता नहीं होता, और अब जिस तरह का हमारा पेपर आ रहा है, जो बेसिक्स के क्वेश्चन हमें पूछे जा रहे हैं, उसमें हमें हर एक स्मॉल पॉइंट का वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू बी वेरी मेटिकुलस इवन अबाउट इवन स्मॉल एंड स्पेसिफिक पॉइंट्स. तो नंबर के कंपैरिजन का पहला रूल ये है कि सबसे पहले हमें डिजिट्स को चेक करना है. अगर ये ट्रू फॉल्स में आ गया तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले डिजिट्स चेक किए जाते हैं. एंड इफ द डिजिट्स आर सेम, देन वी स्टार्ट कंपेयरिंग द नंबर फ्रॉम लेफ्ट साइड. देन यू कंपेयर द डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड. वहाँ से आप कंपेरिजन शुरू करेंगे. तो ये फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू स्टार्ट विथ काउंटिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स. अब नंबर ऑफ डिजिट्स अगर सेम है तब आपकी कंपेरिजन स्टार्ट होगी लेफ्ट साइड से. अरेंजिंग दीज नंबर्स इज वेरी सिंपल. लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जाएंगे. सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट नंबर में यहाँ पर 8 है, ये 9 है, ये 8 है और ये 9 है. हमें ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट आना है, तो 8 और 8 की पॉसिबिलिटी नहीं है. दिस इज नॉट पॉसिबल दैट बिकॉज दीज नंबर्स आर 89,345 एंड द थर्ड नंबर इज 89,435. सो इट कैन नॉट बी द ग्रेटेस्ट. ग्रेटेस्ट कैन बी आइदर दिस 98,345 एंड 98,543. नाउ अगेन द ऑर्डर इज, आई एम नॉट गिविंग यू द आंसर. आंसर आप इसका वेरी इजीली निकाल सकते हैं. नाउ गिविंग यू द ऑर्डर. अब हमें जब दो नंबर्स के 98,345 एंड 98,543 व्हेन द डिजिट्स आर सेम, तब हमें क्या करना है, देन व्हाट वी हैव टू डू. अब ये क्या करना है ये भी आपको पता है कि कंपेयर करना है, लेकिन आपको ये रूल की स्टेप पता होनी चाहिए. ट्रू फॉल्स में या अरेंज द फॉलोइंग में या मैच द कॉलम में आ गया तो आप पजल हो सकते हैं. तो हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है. ये 9, ये 8, ये 3, 4 और ये 5 है. और सेकेंड नंबर में आप देखो तो ये 9 है, ये 8 है और यहाँ पर इन्होंने चेंज किया है, ये 5, 4, 3 है. सो दिस इज हाउ वी कंपेयर. ये 9 और 8 सेम आ रहा है. 3 और 5 यहाँ से हमारा कंपैरिजन चल रहा है दैट 543 इज ग्रेटर. तो ये हमारा सबसे बड़ा नंबर है. नाउ यू लुक एट द ऑप्शंस एंड ऑल द ऑप्शंस ए बी एंड सी तीनों में ही ये ऑप्शन उन्होंने दिया है. तो 98,543 सबसे बड़ा होगा. आई विल जस्ट राइट डाउन दिस इज द फर्स्ट, और उसके बाद आएगा 98,345. दिस इज द सेकंड एंड देयर इज ओनली वन ऑप्शन विच इज ऑप्शन नंबर सी. आप देखो तो ये नंबर का जो हमें ऑर्गेनाइज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, इट विल बी 98,543. दिस इज द ग्रेटेस्ट. देन 98,345, then 89,435. again we have to compare 89,435 और 100s प्लेस अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ पर 100s प्लेस में 3 आ रहा है, 100s प्लेस में यहाँ पर 4 आ रहा है. एंड फाइनली द लास्ट नंबर इट इज 89,345. if you look at it carefully, answer will be option number B. now in such questions we very careful कि आपने करेक्ट आंसर तो निकाल लिया, पर करेक्ट आंसर निकालने के बाद आपको इतनी जल्दी नहीं करनी है कि ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाए. सिंस इट इज़ अ 5 डिजिट नंबर, हमारे एग्जाम में हो सकता है 6 डिजिट का नंबर आ जाए. सो यू हैव टू बी स्लाइटली केयरफुल. एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जहाँ अभी भी स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे हैं, दे आर स्टिल creating a mistake, they are still troubling. What they are doing is they are finding the right answer, they are doing the correct calculation, they mark the correct answer in the option or in the question booklet, but OMR sheet में जाकर जब वो सर्कल करने की बारी है, they are doing the mistake. So to be very careful about all these complete steps. Answer is option number C. Place value of 0
place value of 0 in the number 36 crore 4 lakh 85,298. Let's write down this question first. Now the first problem which you will encounter कि ये नंबर जो इन्होंने दिया है ये 9 डिजिट का नंबर है. दिस इज अ 9 डिजिट नंबर. तो पहला तो आपको थोड़ा सा रीड करने में प्रॉब्लम आएगी, तो थोड़ी सी एक छोटी सी पॉइंट आपको याद रखनी है दैट इफ इट इज अ 9 डिजिट नंबर इट मींस इट इज अ 10 करोड़. जो इसकी जो नंबर बनेगी वो 10 करोड़ में बनेगी. तो यहां से आप स्टार्ट कर लीजिए. दिस इज 36 करोड़. करोड़ के बाद लैक्स प्लेस में यहाँ 0 है, 4 है, तो 4,85,298. सो स्मॉल पॉइंट जस्ट टू रिमेंबर कि 9 डिजिट है तो 10 करोड़ में आ रहा है, 7 डिजिट है तो 10 लैक्स में आ रहा है. तो दिस इज अ स्मॉल पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन माइंड, अदरवाइज आपको नंबर को रीड करने में प्रॉब्लम आ सकती है. नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन. दे आर आस्किंग द प्लेस वैल्यू. नाउ प्लेस वैल्यू वी नो is the digit multiplied by its place. If you go by the number, just explaining slightly in detail, here 8 is at ones place, so its place value will be 8 ones, which is 8 multiplied by 1, 8. The place value of 9 will be, it is at tens place, so it will be 9 tenths, that is 9 multiplied by 10, which is 90. The place value of 2 is 2 hundredths, which is 2 multiplied by 100, which is 200. Now coming to the answer of this question, and for answering the question let us write down the places of all the digits. 8 is ones place, 9 is tens place, 2 is hundreds place, 5 is thousands place, 8 is 10,000s place, 4 is lakhs place, 0 is 10 lakh place, 6 is crore place, and 3 is 10 crore place. Now particularly they are asking the place value of 0. 0 is at 10 lakh place, so its place value will be 0 into 10 lakh. Now remember 10 lakh means after 1 place 6 zeros. But remember 0 multiplied by 10 lakh will be 0. So remember whatever place will 0 come, the moment their question is asking to find out its place value, you have to multiply the digit by its position. So 0 multiplied by 10 lakh will be 0. And 0 is such a number that it is at whatever place, its place value will always be 0. Now here they have given the question according to its place. उन्होंने place value लिख तो दिया है, पर ये question में उन्होंने एक्चुअली सिर्फ उसकी प्लेस पूछी है. वो तो आंसर क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए दैट शुड बी व्हाट इज द प्लेस ऑफ 0. प्लेस ऑफ 0 10 लाख है. प्लेस वैल्यू मे बी द फ्रेमिंग इज नॉट करेक्ट बट यू कैन अंडरस्टैंड. अब यहाँ पर आप आंसर या तो 10 लाख से जा सकते हैं, पर वो प्लेस की होगा कि 0 का प्लेस क्या है. तो 0 का प्लेस 10 लाख है. प्लेस वैल्यू इफ दे आर आस्किंग देन प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज 0. और रिमेंबर वन सिंपल पॉइंट कि 0 कहीं भी आ जाए उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा 0 होगी. वॉट एवर प्लेस 0 इज इट्स प्लेस वैल्यू विल बी 0, बिकॉज आप 0 से उस प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 ही मिलने वाला है. So here in this question I am not going by any option because our correct answer is option number which is not given here, which is 0. Question says during plantation in school children made 60 rows of plants
and each row has 35 plants. Question is asking how many plants they planted all together. क्वेश्चन में बताया कि स्कूल में प्लांटेशन चल रही है और चिल्ड्रंस ने 60 रोज बनाए हुए हैं and in each row there are 35 plants. So now they are asking that what is the total number of plants. So for finding the total number of plants, very simple, you just multiply plant in each row by number of rows. So plant in each row they have given is 35. Plant in each row they have given is 35 and number of row is 60. So just multiplying 35 and 60. 35 multiplied by 6 is 210. Just place a 0 after that. So total number of plants are 2100. Answer is option number C. Now this question is a very basic question, but it will test your ability to understand the word problem. क्वेश्चन ये बहुत आसान है. इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर आएंगे जहाँ पर आपको बेसिक मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी होगी, लेकिन वो वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में होगा. अब वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में सबसे पहला चैलेंज हमें ये आता है कि हमें जब क्वेश्चन लेंदी कर दिया जाए तो हम उसे पढ़ नहीं पाते हैं ठीक से. पढ़ भी लेते हैं तो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इंपॉर्टेंट जो उसके अंदर जो डेटा दिया हुआ है, जो वैल्यूज़ दिए हुए हैं, वो हम ठीक से गैदर नहीं कर पाते हैं, उसको प्रोसेस नहीं कर पाते. दिस इज़ द मेन चैलेंज. आपको पूरे, इनफैक्ट अभी हमारे समर वेकेशन में दिन भर क्लास चलेंगे तो आपको पूरे पीरियड में आपको यही चीज़ डेवलप करनी है, हाउ टू प्रोसेस द सेंटेंस, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है, उसके बेसिस पर क्या हमें चीज़ पूछी गई है. अगर आपने क्वेश्चन को 100% समझ लिया तो आंसर निकालना इज़ जस्ट केक वॉक फॉर यू. यहाँ पर आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी आ रहा है. Next question, seemingly a very easy question. What we will get in our exam will be slightly higher than this. हमें क्या है, जनरली 3 रोमन नंबर्स दे देंगे. तीनों को या तो प्लस करने बोल देंगे, 2 को प्लस करने बोल देंगे, 1 को माइनस करने बोल देंगे. दिस इज हाउ, बट दिस विल बी वस्ट जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट वी कैन गेट इन द एग्जाम. तो इन्होंने पहले हमें नंबर दिया हुआ है CMXCI. लेट्स फ्रेम दिस नंबर. And on to this we have to add I. So C is 100, M is 1000, X is 10, again C is 100 and I is 1. So we have to be slightly careful बिकॉज पहले आ रहा है एक स्मॉलर सिंबल और उसके बाद में ग्रेटर सिंबल, तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे. 1000 माइनस 100 कर दीजिए, दिस इज 900. और उसके बाद 1000 के बाद 10 आ रहा है तो ये तो प्लस करना है, लेकिन आप 10 के बाद आप देखो आफ्टर 10 अगेन इट इज़ अ ग्रेटर सिंबल, तो ये भी आपको दोनों माइनस करने होंगे. 100 माइनस 10 दिस विल बी 90 और 100 के बाद 1 आ रहा है, ग्रेटर के बाद स्मॉलर सिंबल आ रहा है, मीन्स यू ऐड 1 और इसमें और हमें ऐड 1 कर देना. इफ़ यू लुक एट इट आंसर इज 992, which is not in the option. Answer is option number D, none of these. Next question, seemingly easy question. They are saying C multiplied by X. C we know is 100 multiplied by X we know is 10. 100 multiplied by 10 is 1000. 1000 is symbol M. Answer is option number C. Fractions with same denominator are called. Now fractions we know are part of whole and are represented in the form of A upon B, where the value of B should not be equal to 0. And both A and B should be natural numbers.
or whole numbers. Here the A is the upper part, it is called the numerator. B is the lower part, it is called the denominator. When the denominators are same, for example 2 upon 7 and 3 upon 7, you see the denominators are both 7, and when the fractions are having same denominator, we call it like fraction. Our answer is option number A. Let's have a look at the other options also. Option B, unlike fraction. When the denominators are not same, for example 2 upon 5 and 3 upon 7, you see the denominators are different, then we call them unlike fractions. Option number C, proper fraction. Take an example, 2 upon 5. Numerator is 2, denominator is 5. When the numerator is smaller than the denominator, it is called a proper fraction. Option D, improper fraction. Take an example, 5 upon 2. Here the numerator is 5, denominator is 2. So remember, when the numerator and denominators are equal, or when the numerator is greater than the denominator, then it is called improper fraction. Our answer here is option number A. Next question says the mixed numeral for the fraction 37 upon 8 minus 5 upon 8 equals to A. Then what is the value of A? So we see that 37 upon 8 minus 5 upon 8. You see the denominators are same, and when the denominators are same, it is a like fraction. And for subtracting the like fraction, you keep the denominator same 8 and just subtract the numerator 37 and 5. 37 minus 5 is 32. Now numerator is 32, denominator is 8. We can divide it by 8 as 8 4s are 32, 8 1s are 8. 4 upon 1. Remember that when 1 is in the denominator, ignore it. Answer is 4, which is option number B. Now this approach is used only for like fraction. For unlike fraction, we have to make the denominator same by taking their LCM. That we will discuss as the question arrives. Convert 98.6 degree Fahrenheit into Celsius. Converting the Fahrenheit to Celsius, rather degree Fahrenheit to degree Celsius, the first step is subtract 32. Second step, multiply by 5. Third step, divide by 9. Let's operate. So from 98.6, first we have to subtract 32, which will give us 66.6, but I'll subtract this for you. Make 32 as decimal number, 32.0. This is 6, subtracting, this is 6, and this is 6. So we get 66.6. Now in the next step, I'll multiply 66.6 by 5. I'll carry on this multiplication on the next page. 66.6 multiplied by 5. So what you do is you remove this decimal point and just count that after the decimal there is one digit, so we say that it is one decimal place. So in our final answer we will keep this one decimal place, but let's now multiply this without the decimal point. 666 into 5. Multiplying 666 by 5, we know 5 6 are 30, this is 0, carry 3. 5 6 are 30, 30 plus 3, 33, this is 3, carry 3. Again 5 6 are 30,
plus 333. So I get the answer as 3330. But remember, we have to place one decimal point. So from right side, count a digit 1, put a decimal point. So it is 333 only, because when the decimal point is at the end, we ignore it. So on multiplying 66.6 by 5, I get 333. So this multiplication gives us 333. And now in the final step, we have to divide 333 by 9. I'll carry on this division in the next page. 333 divided by 9 is 9 3s are 27. On subtraction, we get 6. Take the 3 down. 9 7s are 63. Division is complete. Answer is 37. So this will give us our final answer as 37. So 98.6 degree Fahrenheit converted to degree Celsius is 37 degree Celsius. Answer is option number D. Next question says water boils at 100 degrees Celsius, which is the same as, you look at the options are given in Fahrenheit. So in this question we have to convert degree Celsius to degree Fahrenheit, and for that the first step is multiply by 9. Second step is divide by 5, and the third step is add 32. Let's perform these three. 100 multiplied by 9 will give us 900. Second step, 900 divided by 5 will give us 180. I'll show you separately this division. And finally 180 plus 32, it will give us the answer as 212. So 100 degree Celsius in degree Fahrenheit will be 212 degree Fahrenheit. Look at the division of 905 here. 900 divided by 5 is 5 ones are 5. Subtracting this is 4. Take a 0. 5 eights are 40. Take a 0. 5 zeros are 0. Answer is 180 that we have done here. So answer will be option number D. Which of the following is not a rectilinear figure? Answering this question, we first should understand or know what is a rectilinear figure. A rectilinear figure is a figure which is made up of straight lines only. If you look at the option number A, triangle. Triangle is made up of straight lines. So it can be classified as a rectilinear figure. Option B is rectangle. Rectangle 2 is made up of straight lines. Option C is square. Square we know is a quadrilateral with all sides equal. So it is also a rectilinear figure. However, if you look at the option number D, a circle. Now in a circle we don't find any straight lines. So that is our answer. Option number D. It is not a rectilinear figure. Question says the lines which lie in the same plane and they do not intersect, they are known as. Understand, the lines which lie on the same plane and they do not understand, they will look like this. This is one line, this is another line. And the lines which do not intersect are called parallel lines. Answer is option number A. Option B, perpendicular lines. Perpendicular lines are lines which meet
at an angle of 90 degree. This is an example of perpendicular lines. Option number C, intersecting lines. This is an example of intersecting lines, the lines which meet at one common point. This is option C, this is option B. Here these two lines are meeting at 90 degree. Our answer is option number A. How many following letters have a line of symmetry? So look at the alphabet A, and if we draw a vertical line of symmetry, then it will be symmetrical. However, the letter P will not be symmetrical even if you draw a horizontal or a vertical line. Similarly, P and P, they are not symmetrical. Again, L is also not symmetrical, but again the letter E, if you draw a horizontal line of symmetry, it will be symmetrical. So the letters which are symmetrical are A and E. So answer is option number B. The table shows the number of pupils in 5 primary classes. Each pupil donated ₹5 to the foundation for the elderly. How much did they donate altogether? तो यहाँ पर बताएं कि अलग अलग सेक्शंस हैं, उसमें अलग अलग लोग हैं. जैसे 5A में 39 लोगों ने डोनेट किया है, 5B में 41 लोगों ने डोनेट किया है, 5C में 42 लोगों ने डोनेट किया है, 5D में 43 ने किया है, 5E ने 37 लोगों ने. So let us find out that how many people have donated all together, and that we will get by adding all these numbers. That's 39, 41, 42, 43 and 37. So these are the total number of people who have donated the money. Adding them, we get 9 plus 1 is 10, plus 2 is 12, plus 3 is 15, plus 7 is 22. So this is 2, this is 2. 2 plus 3 is 5, plus 4 is 9, plus 4 is 13, plus 4 is 17, plus 3 is 20. So total number of people who have donated money is 202, and everybody has donated 5 rupees. So multiply 202 by 5. Multiplying 202 by 5, our answer is 1010 rupees. So the total amount donated, answer is option number B. The prime number just less than 50. So prime numbers we know are the numbers having only 2 factors. Which are 1 and the number itself. Talking about the prime numbers less than 50, they are 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 and 47. So you see that the prime number which is just less than 50 is option number C, 47. Option A, 39, is not a prime number. Its factors are 1, 3, 13 and 39. 49 too is not a prime number. Its factors are 1, 7 and 49. So it has more than 2 factors. 37 is a prime number. 47 is also a prime number, but it is not just less than 50. So we'll choose answer as 47 and not 37. The number of factors of 24 is, the question is asking that 24 has how many factors. So 24 is divisible factor. You understand that this number
24 is divisible by which all numbers? So 24 is divisible by 1. So 1 is a factor of 24. It is divisible by 2. So 2 is a factor of 24. It is divisible by 3. So 3 is a factor of 24. It is divisible by 4. So 4 is a factor of 24. It is divisible by 6. So 6 is a factor of 24. It is divisible by 8. So 8 is a factor of 24. It is divisible by 12. So 12 is a factor of 24, and it is divisible by 24. So 24 is also a factor of. So हमें यहाँ पर ये निकालना था कि 24 के कितने फैक्टर्स है. फैक्टर्स मतलब वो किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है, उसके कितने एग्जैक्ट डिवाइजर्स हैं. एंड वी काउंट दैट वी गिव सी दैट देयर आर टोटल 8 फैक्टर्स ऑफ 24. आंसर इज ऑप्शन नंबर